So hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will begin with the states of matter more theoretically, and in my last video we just moved towards the kinetic particle theory, and we learned that why soever that we learned till now is the reason behind it typically, right? So let's have some more knowledge about the states of matter, which will definitely help us in exams, and we should know, the way they react, the way they behave, and everything. So let's begin with one and one. Okay, so let me choose my colors. I will move towards it. Okay. Yeah. So we will move to solid first. Okay, so yeah, solid works best for us. So let's take some examples of solid first. We have an ice cube. Okay, I don't know how to make these. Suck at this. Yeah, something like that. This is an ice cube for you guys. Or a pencil. Yeah, I like moving towards my surrounding, things that are actually in my surrounding, like, and what you can do to improve. Yeah, a pencil. Or what else? A paper. And what you can do to, and what you can buy, or you can, and what you can. Yeah, a do paper. To, you can, and what So you these are can some like do examples to, of and solid that we what you actually can got do into, to and now we will typically finally move towards what's our solids. Okay, so सबसे पहले we know that it has a shape, your aim is to understand which is what? Which is people like dislike about your topic, which is fixed. your podcast, about your work. ठीक है. If I talk about, it has a volume. Yes, it has a fixed volume too. ठीक है. उसके बाद it has great forces of attraction. अब अगर हम इसके देखें, it has a strong forces of attraction. It has strong force of attraction. What do you mean by strong forces of attraction? Okay, let me just clear those. कि अगर हमारे पास एक for instance if we have a solid, तो उसके बाद छोटे छोटे particles जो हैं, I have told you guys, जो particles होते हैं they attract each other. So when they attract, because solids के fixed shape है, चीज़ें fixed हैं, so these particles attract each other, so they make some forces together, and that is like strong force of attraction that we call it. Okay, so it has a great strong force of attraction. The particles are compactly packed together. ठीक है, the particles जो हैं वो compactly packed हैं together, एक साथ जुड़े हुए हैं. ठीक है, compactly tightly packed हैं ऐसे करके. Then motion, mode of motion क्या है? They have a vibratory motion. What do you mean by vibratory motion? Let me clear it. Vibratory motion की मतलब ये हिलते विलते नहीं है. If we heat them, तो वो अपनी place पे खड़े होके they vibrate. ठीक है, so they have like a typical vibratory motion. If the particles are getting the heat, so their particles begin to vibrate in their places. So they have like a vibratory motion. They vibrate being at their place. ठीक है, so vibratory motion, the particles do not change their position and they will deliberately vibrate. उसके बाद what is the effect of heat they have? The effect of heat they have great. अगर उसको heat दी जाएगी तो उसके particles की जो forces होंगी वो टूटने लग जाएंगी. ठीक है, और ऐसे इतनी amount of heat दे दी तो वो force of attraction को तोड़ के they will convert it, they will change their state. उसके बाद we have, are they compressible? Yes, they are not compressible, not at all, because particles को हम तोड़ नहीं सकते हैं. ठीक है, so this were like about everything. Then we have we learned that yes, it has what effect it has on the heat.
everything. So yeah, this was all about the solids that I could tell you. उसके बाद और भी चीज़ें आती हैं, but I think so this is okay for this chapter for us to know, right? Okay, so then we will move towards the liquids typically. तो ठीक है, तो लिक्विड्स जो होते हैं दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप, ठीक है, दे हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, दैट वी नो. उसके बाद दे मोड ऑफ दे हैव अ मॉडरेट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब उसके पार्टिकल्स यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, मतलब खुद के साथ इतने जुड़े हुए नहीं होंगे. दे विल हैव अ मॉडरेट, मतलब बीच मीडियम, गैसेज और सॉलिड के बीच में है कि मीडियम पे होंगे, ठीक है. उसके बाद इसके जो पार्टिकल्स होंगे दे विल हैव अ रैंडम मोशन, मतलब एक दूसरे पे स्लाइड कर रहे होंगे ऐसे करके, ठीक है. एंड दे आर रैंडम मोशन होती है, सो दे आर नॉट कॉम्पैक्टली पैक्ड, एक रैंडम मोशन है, और दे आर लूजली अरेंज, ठीक है, दिख रहा है ना कि दे आर लूजली अरेंज, टाइटली अरेंज ये हो जाते हैं, बट दीज आर लूजली अरेंज, दे हैव स्पेसेस इन देयर बिटवीन, ठीक है. उसके बाद पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली चेंजिंग देयर पोजीशन. उसके बाद अफेक्ट ऑफ हीट, इसका क्या है, अगर हम इसे इतनी अमाउंट ऑफ हीट देंगे तो ये पार्टिकल्स जितनी फोर्स, मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये तोड़ के ये जो प्लेटफॉर्म से राइज होके, मतलब जहाँ पे लिक्विड का फॉर्म से राइज होके ये अपना चेंज स्टेट करेंगे इनटू द गैस, ठीक है. एंड देयर आर कंप्रेसिबल एंड नॉट ऑल्सो कंप्रेसिबल. कंप्रेसिबल एट अ वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर फैक्ट्रीज में अगर हम देते हैं, सो दे आर कंप्रेसिबल, ठीक है. देन वी हैव गैसेस. गैसेस जो हैं दे आर typically they do not have a fixed shape, they do not have a fixed volume, they have weak intermolecular force, मतलब कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो फोर्स है वो बिल्कुल ही कम है, समथिंग लाइक दिस. दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एंड की रैपिड कंटिन्यूस मोशन होती है, लाइक अ रैपिड मोशन, जल्दी जल्दी वाली मोशन. द इफेक्ट ऑफ हीट इनका है कि अगर इन्हें हीट देंगे तो ये और ज़्यादा स्प्रेड होंगी, और ज़्यादा अपना वॉल्यूम बढ़ा देंगी. देन इट सेज के हमने ये चीज़ बात की है कि गैसेस का बिहेवियर वगैरह, एंड दे आर हाईली कंप्रेसिबल, दैट वी नो, एंड दे आर कंप्रेसिबल. अफेक्ट ऑफ हीट भी पढ़ लिया हमने. तो या that was all about solids and gases and liquids that we needed to know, and I hope this is clear to you guys. It was quite big revision, because in my next videos we will be discussing something very mind storming, so probably they will blow your mind. So I hope this is clear to you guys. Thank you.